हाय, दिस इज डॉक्टर अमित फ्रॉम रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज मैं आपसे उन पेशेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं जिनको पेन यहां जैसे फील होता है और उनको साइमल्टेनियसली दे से कि हमारे को बैक पेन है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हमारे को बैक पेन है और कई बार नी तक जा रहा है, सियाटिका की प्रॉब्लम है। कई पेशेंट्स कहते हैं कि बैक में पेन है और यहां जैसे कहीं पे पेन होता है। सो वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड अ लॉट in the clinic why this pain is happening. Is there any problem in the iliopsoas muscle or some adductor muscle strain is there? But nothing was working out. Their back pain got cured and simultaneously उनका ये वाला पेन भी कम हो जाता था। But हमने कल एक पेशेंट को we tried to stretch the pectineus muscle which is over here around the anterior aspect of the काफी ज्यादा you can say 2 inches on the inner aspect from the ASIS. So जब हमने यहाँ पे pectineus muscle को stretch करवाया, the patient was instantly relieved from his back pain. Even the sciatic symptoms were little less and this pain was almost gone. So we thought that sometimes what happens when the patient is suffering with you can say low back pain, whether it is due to disc problem, whether it is due to tightness of the quadratus lumborum, whether it is a facet joint, whether it is SI joint, और जब sciatica के symptoms होते हैं कहीं ना कहीं I think their pectineus gets tight. So how to stretch this pectineus muscle? I am demonstrating that stretch and definitely it works and helps a lot to the patients who are suffering with back pain and complains of pain over the inner aspect of the inguinal region over here. So what you have to do is, suppose the patient is having pain on its right leg, कि sciatica के symptoms right leg में आते हैं और यहां जैसे हमें पेन फील हो रहा है, sharp stabbing सा पेन होता है यहाँ पे, that is the tightness of the pectineus muscle. So what they have to do is, first जो लेग में पेन है वो आपकी पीछे ऐसे 90 डिग्रीज पे नी रहेगा और ये हिप सीधा रहेगा, ट्रंक सीधी रहेगी, और जो दूसरा नी है नॉर्मल लेग है वहां पे हिप इज इन फ्लेक्शन 90 डिग्रीज एंड नी भी जो है वो 90 डिग्रीज फ्लेक्स है। अब हम क्या करेंगे पेक्टिनियस के स्ट्रेच के लिए, मैं इस जो फुट है उसको इस नी के तरफ अलाइन कर दूंगा so that my back side of the heel is in contact with my leg or with my knee of my involved leg. So मेरी जो front leg का जो heel है that should be in line with the knee of my involved leg and then my back should be straight. I should not overstretch my back and then little thrust आगे को देंगे हम and यहाँ पे एक stretch सा feel होगा and that is your pectineus stretch. Hold it for 10 to 20 seconds and then come back and then again hold it for 10 to 20 seconds. Now my pectineus is in completely stretched position, my back is straight, I am not doing spinal extension and my pectineus is into complete stretch. Hold it for 15-20 seconds and then release. Believe me, this stretch worked magically for my patient and his inner inguinal region pain vanished almost. Even the symptoms of SI joint and radicular pain were less. Thank you so much.